Very good evening. So we'll start the classes, right? We have wait for 5 minutes. Now we'll start the classes. Those who have not there in the last classes or last session, yesterday or day after yesterday classes. So I will suggest that they need to do that classes. They need to at least after completion of these classes, they need to revise or they need to revisit that classes. So it will help you to understand this subject. And for today's subject तो आमे basically एक कथा कहया जाडिबा आज ethics morality और values विषय पढ़िबा. It will be near about 45 to 50 minute classes and 10 of doubt classes. Okay, so I suppose that कि तुम्हें जो माने भी join करिছো तो you are civil service related, so you have some basic ideas about what is ethics. If you don't have basic ideas, no problem. Okay, yesterday आमे कहिथिले फिर भी आज आमे discussion करिबा. We'll discuss about that one. Okay, so before starting these classes, I just request everyone, please turn off your mic and your videos. So it will, unless until I will ask you. So please turn off that mic and videos. Okay. I will start the class. See, yesterday we have discussed about ethics, morality, and values in a crispy way. But just slight glance करथिला माने कि एतुले ethics, morality और values कोन उटे slight glance करथिला. Okay. Today we will read a 45-minute session about these three. What is ethics? What is morality? We'll have some examples. We'll have some examples to understand in a way, and we'll also get some values. We'll understand what are the types of values, and we'll also understand what is the nature of the values. Okay. And also at the same time, we'll understand the ethics and morality and the context behind towards the case studies. Okay. Those who are UPSC or OCS students, they understand, they should know that case studies is your 50% mark of your ethics paper. Okay, and for that only, everything we are going to read, you need to correlate with your case study. Okay, so as I already told you yesterday that values are something. What is values? Anyone? If anyone has present yesterday classes or day before yesterday, can tell anyone me anything about values? So values are basically, if I will summarize it, what is values, तो मु कहि परिबी it is about importance. About importance. What does it mean importance? It means values will tell me, or values will tell an individual that what is preferable or what is rejection. काहाको rejection करिवा, काहाको preference दबा. Okay, which is desirable and which is undesirable. Okay, which is for example, I can say like which is your choice and which is your rejection, everything, whatever. Okay, or what is your for example, superiority versus inferiority. Okay, for you, what is superiority and what is for your inferiority, and what is your desirability, what is your undesirability, and what is your preference, what is your rejection. That is what you will decide according to your value system, what the values you have ingrained. And you remember, value only ingrained through time. It's a long way process, ingrained through time. गोटे दिन रे कहा मुंडरे किसी वैल्यू पसी जाए नहीं, बट वैल्यूज जोटा आम ओडिया रे कहते संस्कार. ओके, सो वैल्यूज इंटीग्रेटेड हवा पे इट्स ए टाइम बाउंड प्रोसेस. इट्स ए टाइम प्रोसेस. ओके, टाइम विदिन टाइम लिमिट भितर, टाइम पीरियड भितर तुमको वैल्यूज को इनग्रेन करबो थ्रू द सोसाइटी, थ्रू योर peers and years, through your family. You will get the values, and according to that value you will be set your preference or rejection, your desirability, your undesirability, your chances, your rejection, your superiority, inferiority. So before that, let me tell you one thing. You can examples. For example, non-vegetarian and non-vegetarianism. There are two things. Okay. Try कर गोटे जिनसे बुझाओ देखो. Try to understand that कि you don't like to eat meats. तुम्हें पसंद करनी. I like to eat meat. मते meat पसंद. But what society is talking about? Society is mostly preferable what? Vegetarians. Okay, because society
is thinking like that. The ethics, code of ethics, the value system कौन कुछ यार कहेंगे कहाँ को मारिबो को पशु को कहेंगे मारिबो, why do we kill someone? Okay, it is something, but our system, but our value differs. Someone has ingrained that value. किछि लोक को सेही value टा पसंद लागु तो सेतमे से vegetarian हेबु पसंद करचंदी, आउ किछि लोक को पसंद करनांती तो से मन नॉन वेजिटेरियन हो पसंद करचंदी. Okay, but in a larger world, जदि हमें larger world रे societal view को देखिबा, so vegetarian is preferable. Vegetarianism is preferable, and according to that you will choose your food, right? तो माने value system तुमको decide के तुमको कोटा पसंद preferable करियो, तुम prefer करियो कोटा rejection करियो. Another thing, for another thing I can tell you like that कि for example, let's say someone is here, for example one of you, maybe Mr. A, and he is liberal in nature, तांको चिंताधारा बहुत liberal, but and he wants to be like, for example he wants to provide gender equality. Okay, जेहेतु से liberal अछंती, जेहेतु से modern society रा values को accept करूछंती, तो he wants to promote or she wants to promote gender equality. But what your society, Indian society कौन mostly patriarchal, mostly patriarchal की नुहा. Okay, because you know, if you are a patriarchal, your value is a patriarchal value. For example, if your value, I'm erasing it, yeah, I'm erasing it. If you anyone want to take screenshot, please take, I will erase it. So, okay. So, for example, if your value is patriarchal, so what you will see, you always तुम जानिबो कि सबले चाहेबो कि men dominate हवा दरकार. हाउसहोल्ड वर्क किए करिवो ना हाउसहोल्ड वर्क वुमेन करिवे. ओके, जदि तमे सुपेरियरिटी इन्फेरियरिटी रेशियो कागो दिवो ना सुपेरियरिटी तमे कागो दबो ना मेन को दबो. तमे हाउसहोल्ड रे कागो दबो, फॉर एग्जांपल तमे गोटे चाइल्ड दरकार, कोन चाइल्ड ना बॉय, तमे मेन चाइल्ड ऊपर बहुत इंपोर्टेंस दबो, बिकॉज़ तम जियो प्रति इंपोर्टेंस दबो, बिकॉज़ योर माइंड इज patriarchal, so your value is patriarchal, so it is a belief system in your mind. Understand what is a value? Value is a belief system in your mind which is ingrained throughout the time. So you will choose boy child rather than girl. तुम गर्ल को पसंद करिबनी if you have a patriarchal mindset. Okay, तमे gender equality को प्रमोट करिबनी, तमे patriarchal को प्रमोट करिबा if you have patriarchal value system. But what if you have like Raja Rammohn Roy, what you are Ishwar Chandra Vidyasagar? So these two persons I can give the best examples you have read in the history. What they are promoting gender equality, right? They are promoting gender equality. They are promoting what? Women dignity. So they are outside of the ethical value. Okay, their value system is different. How about the society value system is different? That is how your value defines your preference, your rejection, your superiority, your inferiority, your preference and rejection, your desirability, your undesirability. That is what your valued systems. So do you understand what is the value, right? So if I'll compare it with the ethics and morality, ethics and morality, these two at the same time talks about what? Good or bad, right or wrong, which one is right, which one is wrong, which one is good, which one is bad. These two are talking about like that, ethics and morality. But there is a slight difference. If I want to tell you that what is the slight difference, morality is of subjective in nature, however ethics is of objective in nature. अच्छा, ये subjective objective कौन? Subjective means individual preference. Subjective means what? Individual. Objective means what? Unbiased or group level. I can tell about group level. Okay, group level रे जदि किछि दिनस आमे कहबा ताको आमे ethics कहबा, however जदि आमे individual level रे कहबा same value system को जते बेले practice करिवो, तुम काली मु से कथा मु कहिथिली कि value is something about preference and rejection, but morality और ethics कौन कहबो, कोटा good कोटा bad, कोटा right कोटा wrong. However morality
is about subjective in nature. Remember, this word should be in your paper. जदि काली मोरालिटी विषय क्वेश्चन आसला सब्जेक्टिव इन नेचर कहया तुमको पड़िबो आ ऑब्जेक्टिव इन नेचर ऑब्जेक्टिव एथिक्स तुमको कहया पड़िबो. प्लीज नोट डाउन इफ यू हैव एन कॉपी मो संगत नोट डाउन करी करी चलता हो. ओके, सो मोरालिटी इन इंडिविजुअल लेवल, हाउएवर ethics is in group level. Ethics is in group level. Another thing you can conclude that the ethics is a larger picture, a larger set. Morality will be your soft set. Ethics will be the universal set. Morality will be your soft set. अच्छा केमिति? Let us understand. I'm बुझिबा. देखो केमिति बुझिबा देखो. बुझिबा एमिति. For example, it is better I'm example नहीं जीवा. Sati. Okay, Sati was something that the society accepted. Group level रे expected है सातला, expect है सातला, right? Expect है सातला. It was accepted. But Raja Rammohn Roy, he does not accepted that one because it was in the group level. It has been codified. Everyone was practicing this sati in the larger whole. However, when it comes with a value conflict, because एठी जो ethical code टा रही ची सती प्रथा पाई तम मोरालिटी रे कोन अछि तम इंडिविजुअल वैल्यू अछि. जेते बेले ये दीटा भितर कॉन्फ्लिक्ट हबो आमे कोनती एथिक्स वर्सेस मोरालिटी कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तम निजर किछुटा मोरालिटी कहू तम विवेक बाधे जाउची, तम निज डिग्निटी कहू नाही जदियो सती समस्त मानुचंदी, बट फॉर मी इट इज नॉट गुड. आई डोंट थिंक इट इज गुड. फॉर एग्जांपल काली यस्टरडे हमरे एग्जांपल दोतले राजवीर मते गोटे क्वेश्चन पचारथले कि मैरिटल रेप is ethical. Marital rape is ethical. Society is practicing that one. But whatever, when we are thinking as a liberal perspective, my morality is something of talking about like that, it should not be. Morality ebe mane achi near about 2 months या 1.5 months पूर्वरु ए हम ओडिसा रे ही केस घटितला. गोटे लेडी पुलिस स्टेशन रे जाई कंप्लेन करची कि ता हस्बैंड पर डे माने एवरी डे एते माने बाध्य करची कि 10 to 12 times for the intercourses. से एते इंडेजर से कांदी कांदी आसी कि पुलिस स्टेशन कहूची आई कांट बियर दैट पेन. But the police does not have that any answer because the police does not answer that questions because marital rape is something is not desirable unless until it is unnatural sexes. The police cannot arrest that persons, only give some warning like that. So this is how the morality conflict are there. से समय कौन हबो ए जो पुलिस ऑफिसर छि थिबो ना से पुलिस ऑफिसर पाखरे इच्छा तो होउथबो कि मुता हस्बैंड को पनिशमेंट करबी, बट ता पाखरे एथिकल कोड अछि, लॉ अछि, एथिक्स कहू ताकू एथिकल कोड कहूची कि भाई तू किछ करि पारिन बिकॉज़ यू आर इन ए सर्विस. पुलिस सर्विस रूल हिसाब रे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सीआरपीसी के तते मानिबा पड़िबो. आ सीआरपीसी कहूची मैरिटल रेप इज नॉट ए रेप. सो फॉर दैट ओनली ही कैन नॉट इंपोज एनी पनिशमेंट ऑन हर हस्बैंड. सो एठी कोन हला मोरालिटी वर्सेस एथिक्स रो कॉन्फ्लिक्ट हला. बुझी पारछो किछ आईडिया आछे कि नहीं हेले किछ आईडिया आछे कि नहीं तुमको? आज्ञा सर. Yes, हाँ, sir. सेम कोन काहे से पनिश करिया को चाहू छी मोरालिटी टा माने से नहीं पनिश कर एथिक्स एथिक्स रे से पनिशमेंट करि परिबो नाही मा मैडम बुझी पारछंती. एथिक्स से पनिशमेंट करि पारेनी बिकॉज़ एथिक्स इज समथिंग ए ग्रुप लेवल कोडिफाइड values which is accepted by the organization, accepted by firms, but accepted by the society. Organization किए तारो पुलिस बॉडी, राइट? ता पुलिस बॉडी कोन कहूची किछि लॉ रूल्स अछि, रेगुलेशंस अछि, सेही हिसाब रे ता कोड ऑफ कंडक्ट कहूची देख बाबू तते काम करिवार अछि कहू हिसाब रे ना पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट हिसाब रे. पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट जदी कहूची कि मैरिटल रेप बिल सेमति कि सिस्टम नाही, यू कैन नॉट पनिश हर बट यू कैन ओनली माने कोन तो डायरेक्टली पनिशमेंट दे परिबन ताको बिकॉज़ मैरिटल रेप के सिस्टम नाही. ता एथिक्स कहूची कि दिस इज नॉट पनिशमेंट, बट हाउएवर his morality is talking about something individual level रे ताको कहूची यार दिस इज वेरी मच इनजस्टिस. एमिति केही जण केमिति करि परिबो? आफ्टर ऑल शी इज ए ह्यूमन, शी इज नॉट ए एनिमल. सो ताको ह्यूमन भली ट्रीटमेंट करबा दरकार, बट शी कैन डू दैट वन. एट दैट कंडीशन he has a conflict. He has a conflict regarding his ethical value and again the morality value. I'll give some other examples also. Got madam? But who has been asked? I don't know you, but got some idea, right? Okay. Yes sir, yes sir.
Okay, okay. So now let us take 3 examples. I will provide you 3 examples. I think you will be very much clear about that what is ethics and what is morality. Okay. The first example I am taking about, your first example is mane kara ki there is a minor rape. Okay, minor rape incident heichi. Minor rape incident heichi seti 2 persons are there. One is your culprit or culprit not. I will tell for example accused, and another person is je hochi ke for example suffered person. Okay, okay, जे accused अछि आउ जे suffered heichi, मतलब कौन कह परिबे जे suffered heichi जेरेडी जो छोटो पिलाटी heichi एप्रूव. अच्छा वर्तमान ये माइनर रेप को रेपिंग करिथिबा पिलाटी हु रेप्ड he is a poor person. He is a poor person, बहुत गरीब लोग. Let's say a rickshaw puller. So now these 2 persons, one is accused and one is suffered, the two come to court. So when court को जाउचंती and court asked this poor accused जे कि इंसिडेंट करिछि, जे कि रेप करिछि, ताको पचारछि कि डू यू हैव एन लॉयर. से कहिछि नाही मो पाखर के लॉयर नाहंती, मु मूर्ख लोक, मते किछि जणा नाही. एंड जे जहा को इंसिडेंट कराय जे सफर्ड हेछि से तार निजर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखिछि. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ताक पाखरे अछि, बट ए गरीब लोकटे पाखरे जेहेतु नाही, तो सीआरपीसी हिसाब रे एंड आल्सो आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे कोन हबो, तो राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हिसाब रे तांको कोन करा जिवो, डिफेंस लॉयर दिया जिवो. डिफेंस लॉयर अर्थात कोर्ट गवर्नमेंट पैसा रु कोटे डिफेंस लॉयर दबो का ये गरीब लोकटा. किंतु डिफेंस लॉयर एक कथा भलो भाबे जानिचंती कि ए पोर लोकटी ही रेप करिछि. कि नो वेरी वेल, से बहुत भलो भाबे जानिछि कि ए लोकटी ही रेप करिछि. ही इज द कल्प्रिट, he need to be punished. But what happened? Court assigned to protect this poor man. Now this poor man's lawyer is ki a defense lawyer. बर्तमान डिफेंस लॉयर पाखरे दीटा केसेस अछि. ता पाखरे एथिकल कोड कहउची गोटे कथा, ता मोरालिटी कहउची गोटे कथा, ता एथिक्स कोन कहउची, ता एथिक्स कोन कहउची बीइंग ए लॉयर. ता क्रिमिनल जे भी हो, मैं ता पाखु को जे भी आसु ता क्लाइंट को प्रोटेक्ट करबा तार धर्म. इट इज एथिकल कोड. ओके, लॉयर धर्म कि ता क्लाइंट को प्रोटेक्ट करबा. ता मोरालिटी कोन कहउची, एते बड़ घृण्य अपराध करितबा गोटे लोक को मु केमिति बंचेबी. एंड आफ्टर ऑल सेम दिन हैला फाइट हैला. एंड तुम जानिछ बहुत सारा डेरिगेटरी क्वेश्चंस करा जाए. तो ये जो सफर्ड लोकटी को, ओके, तो एको बहुत सारा छोटा झीटी को बहुत सारा क्वेश्चन पचारछि, इवन इंसल्टिव क्वेश्चन पचारि के फाइनली डिफेंस लॉयर जीति जाउछि. लेट्स से ऑन कर गेला, जीति गला. नाउ देयर आर टू केसेस. एथिकल कोड हिसाब रे मे बी ही हैज डन गुड, बट फ्रॉम द मोरालिटी से जाए कि मे बी घरे बसी कांदी पारिबा मु कोन करली, आई शुड नॉट हैव डन दैट. बट हिज एथिक्स टॉकिंग अबाउट दैट ही शुड प्रोटेक्ट हिज क्लाइंट. That is the conflict between your ethics versus morality. Because the code of conduct कौन कहउची, code of conduct कहउची मते प्रोटेक्ट करबा दरकार, and for that only से ताऊ प्रोटेक्ट कला. बट ता morality कौन कहउची, I have done a very good bad thing, मते एकदम कम करिवार नथिला. That is the things, the conflict between ethics versus morality. Now come to the second point, public prosecutor. Public prosecutor code of conduct कौन कहउची, ता क्लाइंट को बंचेबो. एंड जदि ए केस रे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जे प्रकृत रे सफर हेइचंदी, जे प्रकृत रे एथिरे कोन हेइचंदी, मु कोन कहबे, जे एथिरे सफर हेइचंदी, जो झटी छोटो माइनर जेटी ताकू धर से कल्प्रिट को कल्प्रिट बोली घोषणा करि दउचंती. कल्प्रिट को अर्थात ए लोकटी को कोनोसी दंड बा पनिशमेंट देई देला, आउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीति जाउचंती. एते कोन हबो ना तांकर एथिक्स कहउतला कि क्लाइंट पाइ लड़ से लढिले. मोरालिटी भी कौन कहूँ मु बहुत भल काम करछि. तो ए जगह रे एथिक्स एंड मोरालिटी कम्स हैंड इन हैंड. ए दीटा जगह रे एथिक्स जहा कहला मोरालिटी भी सेया कहूँ. सो इट इज बेस्ट पॉसिबल वे. बट ए जगह रे कौन हबो, एथिक्स गोटे कथा कहउतला एवं ता मोरालिटी आ गोटे कथा कहउतला. दिस इज द डायलेमा एंड योर केस स्टडी विल कम फ्रॉम डायलेमा. ए जगह रे केबे तो आसे ही नहीं. They will ask your questions from this dilemma, what you are going to choose. One question. Got this idea? This is your example 1. Now let us come to an example 2.
Example 2 is your doctor versus patient. Similar thing. Doctors preference कौन कहूची? Doctors preference कहूची whoever he be the patient जे भी हो तांको life treatment दबा तांकर धर्म. It's his duty, right? But the patient who come to him is a terrorist. Is a terrorist, severely injured. Jodi within 1 hour bhitere taku treatment न करा जाए, he may die. Now there is a conflict. What is conflict? Ethical code versus morality. Morality कौन कहूची? एबे terrorist केते लोगों को मारी के आछी, एको केमिति मु बंचै. But ethical code कौन कहूची? No matter what he is your patient, and your code as your values codified in the group level. Group level means in the objective manner. Objective मतलब तमे bias हेई परिबनी. Ethical code तमु केबे bias करबा को दबनी. तमे निजर पर्सनल जिनस ता भीतर इनपुट करि परिबा नाही. सेति पय जे तमे bias हेई परिबनी. It is an objective in nature. Whoever may be, it may be a terrorist, it may be a good person, it may be holy, it may be a sin. No matter, you have to save him. So this is how. But the morality कौन कहउथला? The morality कहउथला कि मु ताकू न बंचेबा दरकार. In that cases, there is a conflict versus ethics versus morality. Koudi, good or bad? To save this person is good or bad? It is right or wrong? Question आसुची कि नाही मुंडरे? Question आसुची ना? जदि question आसुची मुंडरे, it means ethics आउ morality विषय आमे कथावार्ता करछंती. ओके, जदि लार्जर कोडिफाइड कथा कहबा त this is ethics. जदि individual level कथा कहबा, this is morality. Okay, this is your second example. Now come to a third example. To relate yourself, let us say you have joined Bharat Siksha Academy, one of the academy. It is just an emerging newly emerging institution. सेमती किसी बड़ा रेपुटेशन नहीं. Here is a institution ए बहुत सारा रेपुटेशन अच्छी, बहुत आगुरु रही 20 year institutions. Okay, and the fee of this institution is 1.3 lakh for your OCS or UPSC syllabus courses, and this institution is providing near about 15,000 only, 15,000 courses. Okay, now you are a candidate, you want to prepare for that UPSC or CS exams. Your financial condition is not good. Okay, your financial condition is not good. One of your friend, he is working as a manager in this institution. A manager bari a bada institution re tomar friend, let's say X, is working, and as a friend is working in a very good institution, a reputed institution, you called him and you asked him, dear X, please suggest me, as I have some financial problem and I want to have some to prepare for this UPSC civil service examinations, and please suggest me one institutions. And Mr. X know that कि जदियो आमर एटी बहुत रेपुटेशन ब्रांड अच्छी, but BSA is a newly emerging is truly the competitor of this one, because they are providing best faculties also, best teaching, but they don't have the brand, and there is a two conflict. Mr. X has two conflict. What is the conflict? Now, ethics versus morality. Being the employee of institution A, जेहेतु से तापाकु ता निजर सैलरी ड्रॉ करछि, तार निजर रोजगार सेठी आसुछि, तो एथिक्स कोड कोन कहउछि, एथिकल कोड कोन कहउछि, निज इंस्टीट्यूट को भलो कहबा. तो ए जगह से कोन कहबा मो इंस्टीट्यूट एडमिशन कर. बट ता मोरालिटी कोन कहउछि, मो संगठन प्रकृति हैरान अछि, मो संगठन प्रकृति प्रॉब्लम रे पडिछि, ता पर एते पैसा नहीं, सो इट्स बेटर आई विल सजेस्ट हिम टू admit in the BSA. So that is the conflict, ethics versus morality. Okay, so now this person, let's say, suggested BSA. Okay, remember these cases. Case 3. So now I have explained you 3 cases, and these 3 cases, I think it's better to explain your ethics versus morality. I think all of you should not have any doubt that what is ethics and what is morality, because once you understand the concept, it is very easy to implement in your paper. But you need to write some of the subjective or some of the terminology, then it will be finished. Okay, it will be helpful to you to solve any of the case studies you are going to get. Okay, so that is how your ethics versus morality. And for your point of view, if you want to write some of the definitions about the value and ethics, I'll tell you. Just write down here, there, write down in your paper the definition of value. Okay.
values are the principles on the basis of which an individual or group evaluate preferable versus rejection, superiority versus inferiority, desirability versus undesirability of any situation. So what does it mean? Values are the principles on the basis of which an individual or group evaluate. कौन evaluate करिवो ना काहाको preferable करिवो काहाको rejection करिवो कोटा superior कोटा inferior कोटा desired कोटा undesired of any situation. That is your definition of the value. For example, your value is patriarchal. So what you will prefer? Your desirability कौन होगा? Patriarchal society, men superiority, boy child, right? Then for example, glass ceiling, okay, honor killing, these are something which is associated with the patriarchal society, right? It may be applied to you. That is your definition of values. So can you define that? Can you understand that ki a modern society versus a traditional society, which one you think is a patriarchal? Huh? Which one you think is a patriarchal? Anyone? Traditional. Traditional. Very Traditional. good. Traditional. Right. Traditional is a patriarchal society, right? So here you will find one thing, that you got the definition of value, right? And ethics is what? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁଟା କୋଡିଫାଏଡ୍ ହେଇଯିବ, when the values are codified and it is codified value, it should be in objective in nature, it may or may not punishable. पनिशमेंट अच्छी एथिक्स सहित जुड़ा है कि वैल्यू सहित पनिश रे किसी नहीं, तमे कौन खाइबो कौन न पीबो तम इच्छा भाई, तुमको किए कौन कहबो, बट एथिकल रे तुम यदि कोड ऑफ कंडक्ट को भांगिल, जो कोड जो सेट हेछि तुम भांगी देलो, देन तमे यू मे बी पनिशेबल, राइट? एंड फॉर दैट पर्पज ओनली एथिक्स मे और मे नॉट कम विथ पनिशमेंट. कोई जगह एथिक्स को पनिशमेंट अच्छी, कोई जगह पनिशमेंट नहीं. ओके, दैट इज व्हाट. फॉर एग्जांपल तमे जाय कि जदि एथिकल कोड कौन सेट हेछि कि बड़ लोक को मुंडिया मारि दे, तुम जदि गोइठा मारिबो पनिशेबल हबनी? ऑब्वियसली पनिशेबल हबो ना, राइट? नाउ डेफिनेशन राइट करो एथिक्स और मोरालिटी पई. एथिक्स एंड मु लेखिया दरकार कि डाकी दोछ लिखि दे. ओके, लिखि दोछ नले. Ethics and morality are the principles which helps in determining rights or wrongs, good or bad, on the basis of values. On the basis of values. Okay, ethics and morality are the principles which helps in determining right or wrongs, good or bads on the basis of values. Now compare some keywords, ethics versus morality. Please note down. A keyword तुम पेपर रहा दरकार. एथिक्स टा कौन?
ग्रुप लेवल रे मोरालिटी कौन इंडिविजुअल लेवल एथिक्स टा कौन ऑब्जेक्टिव इन नेचर मोरालिटी कौन सब्जेक्टिव इन नेचर ethics comes with may punishable morality no punishment right ethical you can give an example of modern values morality you can come with your traditional values but it will change I think I we need to write this one modern values right now it may change okay but एटी मैं कोई परिबी this is a societal sanction societal sanction ethics टा okay ये कौन हबो individual sanction ethical को मैं कोई परिबी पेट्रियार्कल सोसाइटी और पेट्रियार्की एठी कौन कर दी परबी जेंडर इक्वालिटी ओके केबे भी तुम कहि परिबन कि एथिकल जेंडर इक्वालिटी कोड ऑफ एथिक्स केबे भी नुआ यदि हेई थांता ना आज जेंडर इक्वालिटी पई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी न थांता राइट जेंडर इक्वालिटी नाही बोली हमें जेंडर इक्वालिटी पई मोरालिटी अछि बट कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स हम कहूची हम सोसाइटल एथिक्स कहूची कोन मैन इज द सुपीरियर एंड यू कैन आल्सो ड्रॉ a diagram like values is the root values रो morality भी बाहर ची यदि काई तो क्वेश्चन आसला वैल्यू मोरालिटी एथिक्स विषय रे तो एमजे ट्राई कर दो वैल्यू रो मोरालिटी भी बाहर ची और वैल्यू रो एथिक्स भी बाहर ची अच्छा अच्छा एथिक्स को एपट लिखित लेता था मोरालिटी एपट लिखाइतला बेटर हबो एपट लिखि देबी मोरालिटी एपट लिखि देबी एथिक्स okay now do you think that morality and ethics both are interrelated and both are feedback mechanism system to each other देखो एथिक्स को जदि मु सोशलाइजेशन करे सेटा मोर मोरालिटी रे कन्वर्ट हे छी आ जदि मोरालिटी को मु कोडिफाई कर देबी से एथिक्स से कन्वर्ट हे जीवो लेट अस टेक एन एग्जांपल देखो फॉर एग्जांपल एथिक्स थिला कि सती प्रथाटा हवा दरकार ताको केही मानिलेनी सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू मोरालिटी राइट और राइट बट एमिति किछि एथिक्स अछि जोटा को सोशलाइजेशन कले हेटा मोरालिटी बाय डिफॉल्ट हे जियो फॉर एग्जांपल टचिंग elders feet touching elders feet is a ethical code or not तुम माने मानुचो कि नहीं पिले इट इज ए एथिकल कोड और तुम मोरालिटी कोन ता अगेंस्ट जाउची की योर मोरालिटी आल्सो एक्सेप्टेड दैट टचिंग elders feet is also good सो जते बळे एथिकल कोड को सोशलाइजेशन कर दिया हला मतलब टचिंग द elders feet is a good thing it's a blessing now it becomes socialized and after the socialized it ingrained as a morality तो मोरालिटी रे इनग्रेंड हे गेला तुमको कॉन्फ्लिक्ट होबनी एथिक्स वर्सेस मोरालिटी रे बट व्हाट अबाउट मोरालिटी व्हेन कोडिफाइड बिकम्स एथिक्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस आई टोल्ड यू दैट कि देखो पिला माने जो माने भी जॉइन करते तो माइक ऑफ करा वीडियो ऑफ करा सो आफ्टर समटाइम्स 5 to 6 days 7 days 2 months 3 months जतरा मो क्लासेस तुम मान थिबो बाय डिफॉल्ट तुम मु डेली कहबिनी तुमे बाय डिफॉल्ट कोन कलो कोडिफाई हे के आसिला मतलब तुमे स्विच ऑफ करके आसिला इवन इफ धीरे धीरे तुम जानलो कि ठीक अछि सार डिस्टर्ब करिया ठीक नो वंस सॉरी जाओ तापर हमें डाउट पचारिबा देन अन्य कोन टीचर मान फैकल्टी तुम क्लास जॉइन कलो देन तुम सेम दिन से प्रैक्टिस रे कलो कि जेबे जॉइन हेलो तुम तुरंत म्यूट कर दोचो और वीडियो को ऑफ कर दोचो इट वाज इनिशियली ए मोरालिटी बट व्हेन इट इज कोडिफाइड इट बिकम्स एन एथिक्स गॉट इट और नॉट पिला माने बुझिले कि बुझिलानी
मोरालिटी को Yes, sir. जदी कोडिफाई कर दबो तने एथिक्स हे जिवो एथिक्स को सोशलाइज कर देले मोरालिटी हे जिवो गॉट इट सो नाउ come an important chapter I already explained you yesterday but not in the that much corner we have already discussed 3 examples now we'll take on the examples like ethics morality and this is ethical and moral we have 3 example example 1 example 2 example 3 example 1 about what public prosecutor versus defense lawyer अच्छा मते गोटे कथा कहबो कहि पिले पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट रहइबो जोन 1 जोन 2 और जोन 3 व्हाट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड से कोर्ट रहइबो जोन 2 रे या जोन 3 रे या जोन 1 जोन 3 वेरी गुड एंड व्हेयर डू द डिफेंस लॉयर स्टैंड्स John 1. 1. जोन 1 okay in the second example doctor versus terrorist where does doctor stands John 1 or 2 or 3 John 1 the doctor wants for John 1 your public prosecutor defense lawyer stands at John 1 public prosecutor stands at John 3 but in the third example his friend recommended to BSA Bharat Siksha Academy को recommend करछि कोड stand करबा से Mr X John 2. very good John 2 रे stand कला so got it that is how it means you are answering it means you are very much clear about that what is your morality what is your ethics that I want to teach you मोर जॉब एया थिला तुमको बुझेबा कि एथिक्स वर्सेस मोरालिटी कोन किमि तमे एग्जाम रे जब केस स्टडीज इंप्लीमेंट करिवो केस स्टडीज रे तमे एथिक्स वर्सेस मोरालिटी रे ए जो डायलेमा को केमि तुम फिगर आउट करिवो कि मते को जगह रे मोरालिटी वर्सेस एथिक्स रा मते डायलेमा आसुची आ से डायलेमा को मु केमि सॉल्यूशन करिवो बिकॉज़ मते सॉल्यूशन करिवो सेही जगह जोटी मु एथिक्स आ मोरालिटी दीटा मते संगे बैलेंस करि चलीबी so you will by default get an answer to your questions whatever the questions they may ask you from the ethical background you may answer your questions that is what I want to tell you and my job is over I want to teach you that what is ethics versus morality and what is ethical what is moral something which is ethical is not moral something is moral is not ethical and something is both ethical and moral that is my job and today I understand make you understand that this is your deal I think if anyone have doubt in this chapter I don't think so jodi kahar achi mate last 5 minute pacharibo okay so we'll move on right now we'll understand about types of values there are many types of values but mainly there are 2 types of values one is instrumental and intrinsic value okay तुम वर्तमान ये वर्ड को जाओनी खाली जानो कि छोटे इंस्ट्रूमेंटल कि छोटे अछि इंट्रिंसिक कि छोटे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ओके इंस्ट्रूमेंटल माने यूटिलिटेरियन वैल्यू means to an end I'll teach you just wait for that one okay just note down these words and intrinsic value means one end in itself intrinsic value means end in itself okay so now let's take an example example 1 you are preparing for UPSC or OCS Odisha Civil Service Examination okay you are preparing but throughout the preparation someone may just तुम आसी एग्जांपल सेति पे तुम आज एथिक्स क्लास जॉइन करछ समवन मे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो कोन कोन लिंक आसी सारोडे कोन लिंक पढे देन लेट अस जॉइन देखिबा कोन लागुची बोरिंग लागुची भल लागुची देख बुझिया पे पढाइलो दैट इज योर मेन वन एंड सम अदर पर्सन विल कम लाइक दैट कि okay it's a pre class let's get some knowledge and some persons come with that I have to understand this chapter because I have to qualify so there are various means to an end कोन गोल हैला कि तुम ए क्लास रे जॉइन करबा बट क्लास रे जॉइन करिया बले तुमर कोन मीन अछि कि जाउची फ्री क्लासेस अछि तो अटेंड कर देबी कि कुछ देखिबा गुड लिंक आछि कोन देखि देबा आ कोन कहूची ना मोर क्वालिफाई करिया निहात दका सिते मते सिविल मतलब मते एथिक्स पेपर जाने दका देयर डिफरेंट मीन्स आर देयर that is called your means to an end
various means are there. It is an utilitarian value. It is instrumental. Okay. While I am talking about intrinsic value, which is the end in itself. It means it is something which is good or something which is bad. ताकू तुम कहि परिबेन कि डिफरेंट वैल्यू रे मते नेक जिबार अछि. फॉर एग्जांपल मु गोटे कथा कहि बरी कि लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक कोन देबी हॉस्पिटल अछि तम एरिया रे. व्हाट इज द एंड वैल्यू? द एंड वैल्यू इज समथिंग ना कि ट्रीटमेंट दबा. इट इज फिक्स्ड, राइट? फॉर एग्जांपल आउ किछि अछि कि अकाउंटेबिलिटी. Okay, or something it is like, for example, integrity, honesty. कौन honesty रो different meaning हे परिबो कि? Honesty means honesty. Honesty रो different meaning कौन हबो? Integrity means integrity. Accountability means accountability. It is always an end. End is positive in result. तार किछि means नहीं. Accountable means you have to accountable. तार किछि means नहीं. मतलब जहार end ही मतलब सेम जो वैल्यूटा तुम भीतर अच्छी से वैल्यू रो किछि डिफरेंट मीन न थाई पारे. से वैल्यूटा गोटे मीनिंग जे से वैल्यू निजे. यू थिंकिंग दैट मते लागु कि मिस्टर एक फॉर एग्जांपल राजवीर इज एन अकाउंटेबल पर्सन. ही इज एन अकाउंटेबल पर्सन. आई नीड टू आस्क हिम टू प्रूव दैट अकाउंटेबल मीन्स नॉट कि से अकाउंटेबल एथि पई होछि तार बहुत सारा मीनिंग अछि. नो, अकाउंटेबल पर्सन मीन्स मु तो अकाउंटेबल पर्सन कहूछि माने से अकाउंटेबल ही. मु कहूछि कि समवन मिस्टर मिसेस वाई इज एन ऑनेस्ट पर्सन. इट मीन्स ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. डजंट मीन दैट ही इज डिफरेंट मीनिंग, राइट? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो वैल्यू तार किसी डिफरेंट मीनिंग है. जहार गोटे मात्र एंड दैट इज गुड, पॉजिटिव या फिर बैड, वेरी बैड. ओके, जो वैल्यू ऑफ मीनिंग आइदर यू आर ए क्रिमिनल तो माइंडसेट रे अछि मींस यू आर ए लोफ. सो समथिंग you are a negative person, you are a devil means you are a devil. You don't need to be approved like different means. Okay, जो माने मारो कहवा कथा हला कि इंट्रिंसिक वैल्यू से वैल्यू जा वैल्यू पाई डिफरेंट मतलब कौन पाथ नहीं. तार मात्र गोटे पाथ आ गोटे ही एंड. तुम्हें भल मीन्स भल, खराब माने खराब. ओके, बट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कौन हबो? व्हिच इज एक्सटर्नल इन नेचर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज internal in nature. Got it or not? बुझी पाइले कि नहीं? तिले बुझी पाइले कि नहीं? जो वैल्यू तुमको डिफरेंट मीन सहित नै कि जीवो दैट इज डिफरेंट थिंग. जो वैल्यू रे किछि चेंज हबन दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच इज इंटरनल. बट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू व्हिच इज एक्सटर्नल. ओके, एक्सटर्नल मींस डिसाइड करिवो बाहर दिन से डिफरेंट फैक्टर डिसाइड करिवो तुमको. बट इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज वेरी मच इनग्रेन्ड विद इन योरसेल्फ. यू आर ए गुड पर्सन मींस यू आर ए गुड पर्सन. यू कांट बी ए बैड, राइट? यू आर ए बैड पर्सन मींस यू आर ए बैड पर्सन. तो जोड़ा बैड मतलब बैड, गुड माने गुड, अकाउंटेबल मतलब अकाउंटेबल. मतलब जो वैल्यू किछि चेंज हे परिबन दैट विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब जो वैल्यू चेंज अछि, जो डिफरेंट मीन्स अछि, दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. इट इज वेरी. So if you want to write the definition, इंस्ट्रूमेंटल रो आ गोटे एग्जांपल देबे कि? ओके, ये गोटे एग्जांपल तुम बुझी पाइलो. आउट एग्जांपल दो किछ असुविधा नहीं. फॉर एग्जांपल यू आर ए फॉर एग्जांपल एबे नबाना गोटे बढ़िया एग्जांपल. एम्स रे गोटे डेड बॉडी थिला, ताकू केही डिटेक्ट करि पार नथिले. आजिका घटना कथा मु कहूछ, प्रेजेंट एग्जांपल. One lady, Yes, sir. she came to hospital and she claimed that this person is her husband. Okay, end was what? Her end was to tell this person as her end कौन थिला कि ए लोकटा डिटेक्ट करिया दरकार. ए जो लेडी जन का आसी तार मीन्स केतरा थिला, तांगर मीन्स कौन थिला? आइदर दी प्रकार बाट से गोटे मीन्स रखिचंती कि फॉल्स क्लेम करिवे. फॉल्स क्लेम करी कि कोन करिवे? तांको हस्बैंड बोली कहबे आउ डेड बॉडी रे जो 10 लाख रुपीस अछि से नै कि जिवे. ओके, वन मीन्स. अनदर मीन्स आर दैट ए जो लेडी जन को जाइथिले कि से कहिबे जे सेकंड कथा रे कि जदी से धरा पड़ी गेले से कथा कहिबे कि मते लागुथला ये हस्बैंड, जेहेतु मो हस्बैंड ऑलरेडी 3 or 4 ला मिसिंग अछंती, तो मते लागिला ए ओदे हस्बैंड. सो मे बी आई वाज रॉन्ग. इट मीन्स शी हैज डिफरेंट मीन्स बट द एंड वाज सेम थिंग. गॉट इट? मैडम जे पचाउछंती बुझिले मैडम?
इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू माने कोन आज्ञा सर तांको माइंड रे वैल्यूज अछि आज्ञा सर डिफरेंट वैल्यूज दैट इज द वैल्यूज सी मीन्स एक्सेप्ट करूछन दीटा मीन्स नहीं गले वैल्यूज तांके पाखरे दीटा जिंस अछि आइदर सी विल बी गुड और सी विल बी बैड बट से डिफरेंट डिफरेंट वे नेक जाउछन डिटेक्ट करा पाई दैट इज हाउ देयर इंस्ट्रूमेंटल मींस इट इज बी यूटिलिटरल वैल्यू जो जगह रे काली जो एग्जांपल दोथिल जे लास्ट क्लास कहितो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस रिमेंबर माने पगैथली माने अछि पिला माने मु डिस्कशन करथली आज्ञा सर मींस Yes, sir. Yes, हाँ sir. मीन्स एंड गोल्स रो मतलब तुम गोल जहाँ अच्छी गोल तो सेम रहिबो किंतु तुम मीन्स अलग अलग हो जाउछि गोल अच्छी एनको हस्बैंड ए बॉडी रे डिटेक्ट करबा बट मीन्स देखो विभिन्न विभिन्न आसलानी बट जदी मु कहिबी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तुम गोल मीन्स कोन हबो सही अकाउंटेबल भाई आ कोन चेंज हे परिबो तमे बैड हेक थोड़ी ना अकाउंटेबल हे परिबो दैट इज व्हाट योर डिसीजंस दैट इज इंस्ट्रूमेंटल और एक्सटर्नल वर्सेस इंट्रिंसिक इंटरनल वैल्यूज आई थिंक क्लियर so now please write down the definitions if anyone wants to write down please write instrumental values is a value instrumental value is a value which is a means to an end which is a means to an end that is it is a value that is it is a value to an extent to fulfill some purpose to fulfill some purpose intrinsic value is a value which has an end in itself without a purpose पिला बुझी पाइल कि बोले जोटी पर्पजफुल है कि जो वैल्यू तुम पई काम करूथिबो ना दैट विल बी एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हाउएवर विदाउट ए पर्पज जदी किछि वैल्यू अछि तुम पाखरे मतलब यू आर अकाउंटेबल you are integral you are honest you are good you are bad right you don't have any purpose for that it has been very much ingrained in yourself it is a subjective in nature in that cases that will be an intrinsic value but जदि जो कोन से वैल्यू तुम पाखरे अछि पर्पजफुल हिसाब रे जेमि तमे एठी आसीच तीनटा पर्पज रे आइदर तमे यूपीएससी क्वालिफाई करा पई चाहू तो या फिर फ्री रे डेमोक्रेसी में जाने पई चाहू या फिर जस्ट आसीच फॉर द sake of to understand what is ethics the purpose are different but the goal is attend the class but the purpose are different when the purpose are different it will be an instrumental value it is clear right so we have got that one so now come to as nature of values hey, am I audible or not dekhi parni pile am I audible right Yes, sir. Yes, sir. yes sir okay Yes, sir. now nature of values what do you think in nature of values before understanding nature of values I'll tell you some example have you anyone know about honor killing सुनिचना पिला माने honor killing Yes, sir. yes sir Yes. mostly it is in a practice in North India mostly it is in North India and some part of the South India I don't think it in Eastern India it is there but it's not that much but mostly in the North and South okay honor killing is something which is actually from 1872 it should be eradicated 1872 रे 1872 जेतबेले यूनिवर्सल मैरिज एक्ट आसीथिला यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872 रे जेबे आसीथिला तेतबेले एटा कहैले कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस बिटवीन द रिलीजन कास्ट रेसिस्ट किछि भी न रहबा दरकार बिकॉज़ मैरिज इज समथिंग व्हिच इज अ सैक्रोसैंट एंड it should be the rights of an individual to practice it okay and just किछि वर्ष पूर्वरु हमर राइट टू मैरी with one choice right to marry of your own choice 21 year add कर दिया हला but still it become a fundamental right
but still there is a honor killing is practicing. Honor killing कौन most एटा कहा जाए कि honor killing is a caste practice, but certainly it is not. And for that you need to understand what is exogamy, what is caste exogamy, what is caste endogamy, and clan exogamy. Clan exogamy. These are two words: caste endogamy and clan exogamy, or sometimes it is can be village exogamy. What does it mean? एक होता है कुछ, for example, you are a girl belonging a Brahmin caste. There is a boy remaining from a Sudra caste. Okay. Now you both decided to marry each other. Then what will happen? There will be honor sufficiency or honor deficiency in a patriarchal society. Patriarchal society रे गुटे honor deficiency आसीबो कोन ना तमे कास्ट बाहर बाहाई परिबनी विदिन कास्ट भीतर ब्राह्मण को बाहाबो शूद्र को बाहाबो ब्राह्मण क्षत्रिय को मतलब वैश्य को मैरिज करिबो सेत पई कास्ट एंडोगामी शुड बी देयर कास्ट एंडोगामी मतलब भीतर कास्ट भीतर मैरिज करो नो प्रॉब्लम बट इफ यू विल प्रैक्टिस कास्ट एक्सोगामी मतलब कास्ट बाहर है then it will bring a honor killing. It was normally believed, but the real katha jodi ame dekhiba na actually it is not the caste exogamy but it is the reason behind clan endogamy. Clan endogamy re maximum karan heichi joti pai honor killing heichi. What is mean clan endogamy? Clan means gotra. Clan means what? Gotra. मतलब निज गोत्र फॉर एग्जांपल यू आर गोत्र फ्रॉम काश्यप यू आर फ्रॉम नागस्य गोत्र यू आर फ्रॉम फॉर एग्जांपल एनी किछि गोटे भी गोत्र होंतु बहुत सारा गोत्र अछि ओके देयर आर डिफरेंट गोत्रस आर देयर ओके बट इट वाज बिलीव दैट तुम निज गोत्र भितरे बाहाई परिबो नाही मतलब सेम गोत्र बाहाई परिबो एठी कोनथला कास्ट भितरे बाहुवा सेम मतलब क्लास कास्ट एंडोगामी इज प्रिफरेबल बट कास्ट एंडोगामी इज एक्सोगामी इज नॉट प्रिफरेबल. But here clan endogamy is not preferable. Clan exogamy is preferable. जब तमे नागस्य है then काश्यप सहित मैरिज करो बट भितर मैरिज कर पाइबे. It means what? फैमिली भितर मैरिज करबा मना. फैमिली रिलेटिव भितर मना मैरिज करबा मना. आ जब तमे ता भितर मैरिज कलो then it will bring towards the honor killing. Honor killing. These are the two things. Caste endogamy but sometimes it is called as village endogamy. Village endogamy means village endogamy means नॉर्थ इंडिया रे बहुत जगह अछि जे गोटे सेम गां रे अछि तो सेम गां भीतर बाहाई परिबन तम गां हम गां समान मतलब हम भीतर मैरिज हे परिबा नाही दैट इज डिफरेंट. नॉर्थ इंडिया प्रैक्टिस करा जाए कि विलेज एंडोगामी अन्य ए गां रे जियो आर गां रे पो को बाहाबो से गां रे पो ए गां रे जियो को बाहाबो यदि सेम गां भीतर के पो जियो मैरिज करिया गले त बहुत सारा न्यूज़ देखिथिबो बहुत सारा कहानी सुनिथिबो इटी मतलब बॉलीवुड मूवीज माने करे कोन करंती काटी दियंती हाथ काटी दियंती ये कर फेंगी दियंती मार दियंती बहुत सारा दिन होय ना सो दैट इज द विलेज एंडोगामी मतलब विलेज भीतर प्रभाव होबे. Now what do you think ये तो क्या रीजन so what do you think about nature of values here? I want to recollect this nature of values to this one. I can tell something about universal versus particular. Nature कौन है थी universal versus particular value. Universal value कौन कहूँ कास्ट हो जहाँ भी हो आम किसी फरक पड़ेनी यार मैरिज तो ये independent right but particular value Indian society रे कौन कहूँ it is patriarchal. Patriarchal means orthodox. Orthodox माने कौन कहूँ भाई कास्ट एक्सोगामी करे हेबनी कास्ट एंडोगामी करो क्लान एक्सोगामी करो. So this is the difference. Natural value कौन होगा universal versus particular value रे फाइट होगा. Objective versus subjective भी होगा ना. Objective versus subjective values जेमि तुम एक एग्जांपल देइथिली ऑब्जेक्टिव वैल्यू कोन एथिक्स सब्जेक्टिव वैल्यू कोन मोरालिटी जेतबेले ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव रे फाइट हुए सेतबेले नेचुरल वैल्यूज डिसाइड करा जिवो. नेचुरल वैल्यूज मतलब तुम वैल्यू जा ऑब्जेक्टिव ना तुम वैल्यूटा सब्जेक्टिव जदि तुम वैल्यू ऑब्जेक्टिव अछि देन से ऑब्जेक्टिव वैल्यूटा मोरालिटी सहित मानुची कि मानुनी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. जदि तुम वैल्यूटा सब्जेक्टिव अछि से सब्जेक्टिव वैल्यूटा ऑब्जेक्टिव वैल्यू मतलब एथिक्स सहित मानुची कि नाही देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. दैट विल बी नेचर ऑफ नेचर. एंड इफ आई विल टेल लाइक दैट कि constant versus contextual, which one is good, constant or contextual? Anyone?
which value is good, constant or contextual? Sir, context. Or obviously contextual. Contextual means modernity, right? Time हिसाब रे चेंज होबा, टाइम हिसाब रे चेंज होबा. फॉर एग्जांपल आज हमको जेंडर इक्वालिटी एलजीबीटी को सपोर्ट करबा दरकार, राइट? वी शुड सपोर्ट इट दैट, बट हमर कांस्टेंट वैल्यू कोन कहूची, एथिकल कोड कोन कहूची, दिस इज डायलेमा. प्रोजेनी हेई परिबो नाही, ओके, बिकॉज़ प्रोजेनी इज समथिंग रिक्रिएशन. रिक्रिएशन हम वेदर कहूची ना, रिक्रिएशन शुड बी देयर. आज जदि गर्ल गर्ल को मैरिज करि गले, बॉय बॉय को मैरिज करि गले, देन हाउ कैन बी a recreation, why can be a progeny? So for that reason only we don't want to change. And that book has written near about 5,000 to 6,000 years ago. The time has evolved, the environment has evolved. If you are liberal society, then someone will tell that we are modern, we want to allow this LGBTQ because this is modern. The contextual value is something which is mostly preferable. The contextual value will not create a morality versus value conflict. It will always create a morality versus ethic conflict, right? Same thing, traditional versus modernity. Sometimes traditional is good, sometimes modernity is good, right? It is depends. Sometimes oriental versus western. Same. This is how तो मु कॉन्टेक्स्ट जानवा दरकार कि मु को जगह रे वर्ड कोटा इम्प्ली करबी, कोटी ऑब्जेक्टिव लिखिबी, कोटी सब्जेक्टिव लिखिबी, कोटी कांस्टेंट वैल्यू विषय कथा करबी, कोटी कॉन्टेक्चुअल वैल्यू विषय कथा करबी, कोटी ओरिएंटल वैल्यू विषय कहबी, कोटी वेस्टर्न वैल्यू विषय कहबी, कोटी ट्रेडिशनल वैल्यू कहबी, कोटी मॉडर्न वैल्यू कहबी. सो दिस इज द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड इट इज, I always explain that value is an independent individual concern. जेहेतु एटा इंडिविजुअल कंसर्न, तो इंडिविजुअल कंसर्न रे कहार या भीतर कहा किए यूनिवर्सल होता पारे, किए सब्जेक्टिव होता पारे, किए वेस्टर्न होता पारे, किए ओरिएंटल होता पारे, ता वैल्यू ता डिसाइड करियो. इमिति होता पारे किछि वैल्यू ओरिएंटल रे आसुची, किछि वैल्यू मॉडर्न रे आसुची, किछि वैल्यू कांस्टेंट रे. फॉर एग्जांपल गोटे लोक बापा मां को पाद को टच करबा, बापा मां को रेस्पेक्ट देबा, जॉइंट फैमिली तो रहबा प्रैक्टिस करछि, बट सेम टाइम रे से कहउछि कि एलजीबीटी की भलो, सेटा मोर किछि असुविधा नै. ता माने कोन, तार किछि वैल्यू ओरिएंटल भी अछि, किछि वैल्यू मॉडर्निटी भी अछि. इट डिपेंड्स कि तो वैल्यू बहुत प्रकार अछि, के कोटा को वैल्यू एक्सेप्ट करियो. दैट इज व्हाट योर नेचर ऑफ वैल्यूज. क्लियर बाबू, पिला माने बुझि पाइले कि नै रे? हां, Yes, sir. Yes, sir. okay. So if in doubt, we have 3 minutes, you can ask. ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ର ଅର୍ଥ ଯୋଉ କହିଲେ ସଂସ୍କାରତା ଓଡିଆଟା ମେ ବି ତ ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିବ. व्यापक भी हेई परियो. आई जस्ट गिवन एन एग्जांपल ओनली. इट मे बी व्यापक हेई परियो, बट एक्जाक्टली ओडिया को तो मु कहि परियोनी. बट आमे एति जानचंती पे तो कोन संस्कार दिया आइछि. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू हैव इनग्रेन समथिंग फ्रॉम द टाइम. टाइम रे आमे कोटा इनग्रेन करंती रे बाबू. टाइम रे इनग्रेन कहा पाकर करंती, पीयर्स एंड नियर्स पाकर करंती, स्कूल्स पाकर करंती, फ्रेंड सर्कल पाकर करंती, फैमिली पाकर करंती. ताको हम कोन में दैट इज वैल्यू. ओडिया रे एक्जाक्टली मीनिंग तो भाई मु प्रति शब्द विपरीत शब्द तो सर मु जानिनी, बट दैट इज वैल्यू. Sanskar, it means that is value which has been ingrained throughout the time, throughout the period, because it takes time. That is what the reason. Okay, sir. Okay, thank you. Anyone, any doubt? So गोटे क्वेश्चन पचार तुम मानू कि मतलब मते क्लास रे तुम स्पीड तो हो जाऊनी. एम आई स्पीड मतलब बहुत स्पीड हो जाउची तुम मानू, बुझी पारछ ना? तो ओडिया तो मु मिसे ही सेत पई कहली, किछ असुविधा तो नै ना? ले No, sir. ओके. Sir, I have a doubt about ओके धनेश्वर. हां धनेश्वर आई जस्ट मु तुम पचार जाउतली को कोन डाउट को धनेश्वर. sir, about accountability and responsibility. अबाउट अकाउंट. हां कोन डाउट हैला बाबा? Sir, यार मैंने सर कंफ्यूजन है कि ये मीनिंग जस्ट और मैंने डिफरेंस करते तो सेटा रे हाँ हाँ सही 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 अल्प अल्प रे ही
exactly that is the alpha के difference ଅଛି. Both the responsibility and accountability are equal, but when your responsibility, your procedures and methods is fixed to a particular matter. I have already explained you to yesterday. Particular, but a particular responsiveness or a particular action रे जिते बड़े तमे तमरा से मेथड और प्रोसीडियर को सेट करो सेतले यू आर अकाउंटेबल टू दैट वन. फॉर एग्जांपल हम कहबी तुम काली गोटे एग्जांपल देथिले ना. फॉर एग्जांपल यू आर ए कलेक्टर, राइट? You are a collector. Every day you are signing. Every day you are signing thousands of, hundreds of signs. बहुत सारे डॉक्यूमेंट तुम साइन करते, right? Suddenly, someone came up with that you have signed a paper where you have declared you have given a death certificate to someone, but unfortunately that person is alive. Se lokoti vanchich. So this is the action that you have a method and procedure you have established, but now you want to provide your responsibility for that one. Thousands of signs you have done, but now for the signalers, are you ready to take the responsibility? If you are ready, yes, it is my fault, then you have the accountability. In a negative way. In the positive way, you have signed hundred of signs. No matter which sign you have in the Monday, in the Tuesday, on the some day of the year. But if someday, some person come up with one sign that you have done, you are always ready. You should be always ready that I am accountable. I am responsible for the tax, this act. Out of the infinite possibility, if you are ready to take infinite possibility or infinite works or infinite procedures or methods done by you, at any instance, if someone coming with one incident, and if you are thinking that yes, you are responsible for that, so that is means you are accountable. Got it? Dhaneshwar बुझिले बाबू. Dhaneshwar. क्या आंसर कॉल दियंतु जो साइन पर particular, I want to tell you particular गोटे वर्ड मु कहया ପାଇଁ चाहूची कि particular duty बा responsibility को particular duty बा responsibility को तमे जेते बेले कोनसी गोटे प्रोसीड्यूर आ मेथड रे प्रोसीड्यूर हो बा मेथड हो एस्टैब्लिश करी कि निजर रेस्पोंसिबिलिटी निभेबो सेते बेले तमे अकाउंटेबल हवा आउट ऑफ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज. मु तुम कहली ना तुम प्रतिदिन बहुत सारा साइन करूछ, but age in one day, 1 month, 1 instance, 1 hour, काली जदि कोनोसी भी समय तुम से साइन रे तुम क्वेश्चन पचरा जाए, you should be ready and you are thinking that yes, I am responsible, yes, I have done this work, yes, I know that work, what is the consequences should be there, it means your accountability. Every procedure, if I in particularly એટલે મુ ચેક કરવી यदि મુ ભાબીવી then મો કથા એકતા હવા દરકાર, yes, every work has done by me, it is purely based on my knowledge, I have done it and I know the consequences. If the consequences is good, it's also me. If the consequences is bad, it's also me. That is what you are accountable in nature. And if you want to know this one majorly, आमे accountable chapter रे minimum 2 class नबा आमे ए गटे वर्ड नुहो तो सेते बेले तो आमे बहुत सारा एग्जांपल्स नै कि बुझीबा देन तमे बुझी पारिबा. एठी मते गोटे एग्जांपल तुमको देली भी फिर भी तुम यदि बुझी पारो न then wait for the accountable chapter, will you understand that one. Okay, Dhaneshwar. Okay, I think you have problem with the definition, right? I know, I think you have the problem with the definitions. I will make it clear to you. Okay, don't worry. Okay, Dhaneshwar. Chalo. Anyone have doubt? सर इंस्ट्रूमेंटल टा कौन सा यूटिलैटरल वैल्यू सेटा टिके कहबो. हां, यूटिलिटेरियनिज्म रूल्स मु कहि जे यूटिलिटेरियन वैल्यू एक्चुअली तमे ताको एबे एक्सप्लेन करि हबनी यूटिलिटेरियन वैल्यू ताको टाइम लागियो बाबू. आमे एतले वैल्यू सिस्टम मोरल थिंकर्स पढिबा ना सेते बेले आमे यूटिलिटेरियनिज्म कोन पढिबा. ओके, तो सेही समय टिके सेटा को पढिबा. I just give a glimpse एबे टू सेटा को पढिबा विषय कांसेप्ट I will let you know, but wait for the moral thinkers. Okay, विश्वरंजन. यस सर. ओके, बाय द वे तुमको इंस्ट्रूमेंटल माने बुझा पड़ला तो इंस्ट्रूमेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू सेता तो डाउट नहीं ना. आज्ञा सर बुझा. ठीक है. इप्सिता, you have any doubt?
No, sir. Very good. Pragya, do you have any doubt? Yes, sir. You Sir, have doubt? Okay. sir, public prosecutor and defense lawyer. Sir, ସେଇଟା sir public prosecutor John 3 ରେ sir କେମିତି ଆସିବ sir ସେଇଟା ବୁଝିପାରିନି। ତମେ शायद एग्जांपल ଟା ବୁଝି ପାରିଲନି ମତେ। Yes, sir. ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ମନେ କର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର କିଏ ଯେ ସଫର୍ड ହେଇଛି मतलब ଯୋଉ ଝିଅଟିକୁ ରେପ୍ କରାଯାଇଛି ମନେକର ଯୋଉ ମାଇନର ରେପ୍ ହେଇଛି ତାର କେସଟା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଲଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ଲଢିଲେ ଆଉ ଜିତିଲେ ବି वन कले कोड एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट कौन कहूँ एथिक्स कहूँ लयर मानकर कि तुम क्लाइंट जी भी हो तुम क्लाइंट को बंचेवा तुम धर्म इट्स मीन्स कौन कले से एथिकल को मानिले से क्लाइंट पे लड़िले हाँ आउ सेकंड तक मोरालिटी कौन कला गोटे दोषी को प्रकृत जे दोषी था ताको मु दंड देली गोटे निर्दोष को जे दोषी नथिला जे सफर हेतला ताको मु ताको न्याय देकी मो जीवन में बहुत भल काम कली पुण्य काम कली तमन ता मोरालिटी भी ता सहित अछि कि नहीं अछि कि ना नहीं अछि Yes, sir. इट्स मीन तमन ता मोरालिटी भी अछि एथिक्स भी अछि से को जन रहबो ताले ए जन रहबो ना बुझि पाले मैडम Yes, sir. Yes, बुझि sir. पाले कि नहीं हां ओके अब एनीवन एंड डाउट आउ का पर डाउन अछि Thank है you, ना sir. ओके हम तो सब हम प्रियदर्शिनी साहू मैडम आपन किसी डाउट अछि नहीं ना नहीं सर एबे जहाँ पढ़ेले तो बुझी ହେଲା आमे किछि निज आड़ पढ़िबु कि आउ किछि बुक्स कि ना बिल्कुल धीरे पढ़िबा धीरे अरे मु कहिछि मु ऑलरेडी कहिछि आइदर सुबाराव हो या फिर लेक्सिकन हो प्लान योरसेल्फ रीड एटलीस्ट 20 पेज ए डे 20 Yes, पेज ए sir. डे पढ़ जेबे तुम एथिक्स क्लास बिकॉज़ एथिक्स क्लास सरला परे पहिले आउ तुम तो पढ़ी परिबन एंड मु चाहूँ तुम मिनिमम 10 टाइम्स सारो आ जहाँ पाखे पुराना बही अच्छी ताको साइड रे रखी दियो नुआ लेक्सिकन किन आण कहीं प्रति थर तुमको नुआ नुआ जिन मिल यूपीएससी क्वेश्चन पचार नुआ नुआ टर्मिनोलॉजी आसो नुआ तुम 2019 से बही किन रखी पुराना बही किए से यूज कर दैट इज वेरी मच फल्टी सेमती केवे करनी 2022 रे जो क्वेश्चन सॉल्व होती तुम ताकू कर बिकॉज तुम 2023 एग्जाम दवाई जाऊँ या फिर 2024 दवाई जाऊँ ओके तुम नुआ लेक्सिकन बही किण या फिर जी सुबाराव किणुच जहाँ को भी किण तुम ओके इट शुड बी न्यू मेथड एंड लेक्सिकन विल बी स्टैंडर्ड Sir, टेक्स्ट बुक which is good माने हम को देटा आपन both को are व्यू रे good कोडा अरे पड़ो both are good सर यू सजेस्ट लेक्सिकन इज स्टैंडर्ड हाँ लेक्सिकन इज स्टैंडर्ड आई टेल यू दैट तुम लेक्सिकन पढ़ सुबाराव जा पढ़ा कथा ताकू मु निजे तुमको पढ़े देबी ओके एथिरु जहाँ Okay, जिनस sir. तुमको बाहर करी तुमको पढ़ेबार अछि मु तुमको कहि देबी तुम लेक्सिकन को मिनिमम 10 टाइम्स रिवीजन कर मिनिमम ओके 10 टाइम्स भल भाव सारिया दरकार लेक्सिकन ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी तुम पाखरे तुम मुंडरे पसिक रहया दरकार ओके ठीक अछि Yes, sir. Yes, sir. आमे बेसी टाइम दबानी यार आमे डेली एबे क्लास तमे दोचो 1 आवर क्लास दोचो राइट 1 आवर एबे क्लास दिचो आउ तमे रूम रे घर बसिक 1 आवर पढ़ो एमती पढ़ी 2 आवर 3 आवर दियो आमे तो 2 मंथ लागिबनी ताठू तो आगरी भी आमे क्लास आर दबा तो बहुत कम टाइम दबा बढ़िया मार्क भी फ्रेश करबा राइट विल डू इट जयप्रकाश तुम डाउट अछि नहीं ना No, sir. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन गुड नाइट Thank you, sir. Good night. Thank गुड you, नाइट sir. Good Thank you, night. sir. Good night. Thank you, sir.